Okay, now you can see over here, um, as we discussed last time, that we decided last time that we will start from discussing these questions. He says here that, do you know any element having no neutron in its atom? We say yes, we have one atom or an element which has no neutron, and it is hydrogen. You see that hydrogen has, we represent hydrogen like this: hydrogen 1 and 1. Now you know that this number represents what? This number represents atomic number, or we can say that number of protons. Number of protons. And what does this number represents? This number represents number of neutrons. And Plus number of protons. so if number of proton is already 1, then what will be number of neutrons? And if total number is already 1, so n will be equal to 0, right? So yes, we know that hydrogen is an um, element which has no neutron. That's the only case. Nothing else has such a case. Apart from that, we know one more thing is that there are some isotopes of hydrogen which carry one neutron, and there is another isotope which carries two neutrons, but number of protons remain same. Obviously, isotopes are those which carry equal number of protons but different number of neutrons. So hydrogen has three isotopes. The one which carries only one proton and zero neutron. Second, deuterium. We call it as deuterium because it carries one proton and one neutron. And the third one carries one proton and two neutrons. Then you see here that who discovered an electron, a proton, and a neutron. You see that we would, Chadwick. You look at here. We studied it yesterday that Chadwick had discovered neutrons, right? And then you see that Goldstein, he discovered protons, and Rutherford discovered, yes, exactly, no, not Rutherford, but Sir William Crookes. Let me just confirm it. Sir, Yes, exactly. Yes. did you explain the equation under the discovery of neutron? Because I couldn't hear you, so I didn't understand what you were saying. Yes, exactly. We have studied that as well. You look at here that Sir William Crookes had discovered electrons, right? So you have to memorize these names. Are you asking about this equation? No, sir. And then the one under the discovery of neutrons. ये वाली? Yes, sir. हाँ जी, हमने इसको पढ़ा था. Sir, Can you explain it once, sir? What? Can you explain it once? sir, I have a question. And what is it? Should I go ahead? जी जी. Sir, on the very above corner for the cathode rays and discovery of electrons, it's written that J.J. Thomson was the person who discovered the electrons.
He was awarded for it as well. There is Okay. a circle in which it's written. Okay, okay, just wait a second. Let me see. Sir, it's in the properties of cathode rays. Yes. Point number 5. Sir, there is a type of sphere or circle in which underneath it's written about J.J. Thomson, who discovered the electrons. Okay, okay, then just mark it and then remove Sir William Crookes, and mark Sir J.J. Thomson, right? And it is also written over here. Okay, thank you so much. Okay, now come over here. If you would have read it carefully, he would have said to you that there was a beryllium element on which alpha particles were bombarded. Now, alpha particles mean helium, on which helium particles were bombarded. And when they bombarded helium particles, they discovered some rays and the change in the atomic mass as well, right? But if you will see here, 6 plus 0 is equal to 6, and 4 plus 2 is equal to 6. So total proton number before and after the reaction remained same, and 9 plus 4 13. Similarly over here you see that 12 plus 1 is equal to 13 as well. So when he performed an experiment, he observed something else present in the atoms as well. um, when they weighed the when they measured the mass of an atom, they found that it is not equal to number of protons. There must be something other than protons present in the nucleus. So then they call it as neutrons. And when they discovered it, they also tries to measure its mass by performing some experiments. And scientists find out that its mass is also nearly number equal to the mass of proton, or we can say that mass of proton and electron mass of proton and mass of neutron is almost equal. Did you understand what I just say? Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. When he Sir, are we says that supposed to he when he memorize says this as when well he to bombarded write in the discovery of neutrons? alpha particle mean that he bombarded actually helium on a beryllium target. He observed that highly penetrating radiations were produced. So these radiations were produced along with change in proton number of the beryllium. So beryllium was actually changed into carbon, and when carbon was produced, along with this some gamma rays. I told you the name of these as well, like gamma rays. तो वो प्रोड्यूस हुई थी एंड दे हैव नो चार्ज ऑन देम जस्ट लाइक जो कैथोड रेज थी उनके ऊपर -1 चार्ज होता है, और जो केनाल रेज थी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो रेज होंगी gamma rays, highly penetrating radiations, they carry zero charge, these are neutral। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद उनका आता है कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फ्रॉम ए न्यूट्रॉन। वी से दैट mass of electron is 1840 times lesser as compared to mass of neutron, and electron has -1 charge and neutron has a charge of 0। Just like I'm going to, rather than writing down large sentence, um, you can just look at here. Okay.
I would say that this is neutron and this is electron. And here I'm going to write down the mass, and here I'm going to write down charge. Okay. So mass of neutron, if mass of neutron is 1, mass of electron is 1 over 1840. And if mass of neutron is, sorry, charge on the neutron is 0, while the charge on electron is minus 1. Do you see it? Do you see I have written this on the screen? Yes, sir. Just a minute. Okay. Okay. So this is the difference between neutron and electron. And one more difference is that neutron is in the nucleus while electron is outside of the nucleus. Then he says explain how anode rays are formed from the gas present in the discharge tube. The same thing like just like we discovered yesterday, sorry, we discussed yesterday that when we हीट कैथोड जब हम यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं और एक बड़ा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम दिस मेटल. Sir, may I? जी. Sir, जी जी बोलें. may I? Yes please. So when the cathode rays, or like when they come in contact with the gas particles, they ionize, and because those rays they take away the electrons, leaving behind the protons, which means now the particles become positively charged, and thus they are attracted to the elect to the negatively Yes, exactly. charged Right. dots. Right. So actually there are many gas particles over here, many gas particles. So let's say there is gas particle was over here as well. When this ray was going into this direction shown over here, it will carry an electron with itself. देखिए पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, बाद में इलेक्ट्रॉन ले गए. And this circle becomes positively charged. Because this becomes positively charged, the cathode was negatively charged, therefore it started to move towards that direction. ठीक है. This is how anode rays are produced. Okay. Now we will see that how Rutherford suggested that an atomic model. How, like, what did he say that what an atom does look like? So just wait a minute. Not a minute. Okay. Rutherford's atomic model. He says that Rutherford performed some gold foil experiment. He took some gold foil. Okay. To an to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. It's mean that he says that either they are just like stuck with each other because they are oppositely charged, or there is some other type of arrangement. He bombarded alpha particles and on a 0.00004 thick gold foil. Like you can see, such a gold foil, um, I would say that not possible to see with our naked eye. So somehow he managed to do that. Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. These these are actually helium. देख ये जो अल्फा पार्टिकल्स की हम जब भी बात करेंगे उसका मतलब होगा हीलियम. हीलियम की जब भी बात करेंगे it would mean alpha particles. Um, they can penetrate through the matter to some extent. Why did he use helium? Examiner can ask the question that why did he use helium particles or alpha particles? We would say that it is because they can pass through the matter. They can penetrate through the matter. While we studied it yesterday that alpha particles, there are some beta particles and gamma alpha particles. They also have some penetration power. Sorry, gamma has the highest penetration power and beta is even greater. Okay, okay. We studied yesterday कि अगर हमारे पास एक पेपर होगा ना, पेपर जितनी थिकनेस होगी, just like your paper.
of your book, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते. That is why he has taken such a very thin gold foil. उसको और थिन किया. थिन करने का मतलब है उसको बारीक 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 यानी पतला उसको करते रहे. What he actually did is, like you can see, हम यहाँ पर अपना एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. Let me see this. Sir, I can't hear you. You cannot see. No, I couldn't hear you. Okay. Your voice is very low. Okay. Okay. Do you hear me now? Yes, sir. Okay. He took a very thin gold foil. ठीक है. गोल्ड फॉइल होगा तो ऑब्वियसली उसके पास एक एटम्स होंगे डिफरेंट. आई विल ड्रॉ एटम्स ओवर हियर. ओके, लेट्स से ये. और यहाँ पर हमारे पास कोई और यहाँ पर हमारे पास है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रेडियो एक्टिव है. There are some radioactive elements. You know that radioactive elements are those which contain different number of neutrons and protons. Now, what will happen when he bombarded some particles, like when he bombarded some alpha particles onto the gold foil? ये सारी gold foil है. This is the gold foil, right? When he bombarded some elements over here, तो कुछ ने तो इस तरह सीधी चली गई. Without any deflection, they just pass through them. Most of them just pass through them. और कुछ यहीं से वापस आ गई. इसने इसको हिट किया और फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ गई. एंड देयर वर सम अदर्स एज वेल. इट्स लाइक वो स्ट्रेट गई यहाँ से. ठीक है. और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है. एंड देन देयर वर सम अदर्स एज वेल. दे वेंट लाइक दिस. और they also turned back at a little angle. But most of them were passing as it is. ज़्यादातर जो थी वो स्ट्रेट बिल्कुल जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. और कुछ जो थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी ऑब्वियसली. अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को हिट कर लेती थी या पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो इस तरह से भी चली जाती थी. एंड there were some other rays which deflected at fairly larger angles. So there were some different types. So what we can conclude from it? We can conclude from it that when they were, because most of the rays were passing through them straight. ठीक है ना. वो हिट नहीं कर रही थी किसी चीज को. They were not deflecting back. They were not reflecting back into the same medium. So we could say that it mean most of the space in an atom is empty. It means that most of the space in an atom was empty. Therefore, most of the rays were passing through them straight. Like ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जाई जा रही थी. इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर स्पेस जो थी वो एम्प्टी थी. वो स्ट्राइक ही नहीं करती थी किसी चीज़ को, इसलिए वो स्ट्रेट पास कर गई. बट uh, there were some rays which were deflecting exactly in the same medium through which they were passing, like at 180 degrees. अगर वो
जिस डायरेक्शन से गई थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वापस आ रही है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ना कोई बहुत छोटा डेंस पार्टिकल है, वी कॉल इट एज न्यूक्लियस, वी से दैट इज द न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस को हिट करती थी जब वो न्यूक्लियस को हिट करती थी तो क्या होता था कि वो आ, वापस उसी मीडियम में वापस आ जाते थे, 180 डिग्रीज पर रिफ्लेक्ट हो जाते थे। और फिर कुछ रेस थी जो फेयरली लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट होती थी। इसका मतलब ये था कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स, ऑल ऑफ दीज रेस इन रेड एंड ब्लैक, ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जब वो रिफ्लेक्ट होती थी या डिफ्लेक्ट होती थी, इसका मतलब क्या था? दे आर गेटिंग रिपेल्ड। बिकॉज अब ये वाली को देखें, ये वाली, और मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। when it was going to pass through this in this direction, it was get repelled। ये रिपेल होगी वहां से क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और रे भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये कहाँ से गई? इस तरह से। ठीक है। so this is what Rutherford has performed in an experiment. We will see what is written in the book. Okay, you see here कि कुछ थी वो रिपेल हो गई, some got very large deflection, majority of the particles they pass undeflected, and there they got some small deflection as well. So what were the observation Rutherford made? He says that almost all particles passed to the foil undeflected. Out of 20,000 particles, only a few का मतलब maybe 10 or 20, बस इतने से, only a few particles deflected at fairly larger angles and very few bounced back on hitting the gold foil। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम। अब इसके रिजल्ट क्या थे? ये तो उसने ऑब्जर्व किया था ना, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या थे, इसने क्या कंक्लूजन क्या किया? He says since most of the particles passed through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। ठीक है, यानी ये देखो, ये अगर एक बॉल है, हम फिर से बना लेते हैं एक साइड पे। लेट्स से दिस इज एन एटम। He says that its most of the space is empty, only there is a very tiny particle in the center of it। सेंटर में एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी of an atom। Then he says the deflection of a few particles prove that there is a center of positive charge in an atom which is called the nucleus of an atom। Then he says the complete rebounds of the few particles shows that the nucleus is very dense and it is very hard as well। ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा डेंस और इतना हार्ड है कि अल्फा पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं कर सके, बल्कि उसको स्ट्राइक करके वापस आ गए। Since a few particles were deflected, it shows that size of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। Then he says electron revolve around the nucleus as well। Why? How did he observe it? Because हर दफ़ा उसको सेम डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही थी, कुछ डिफ्लेक्शन समटाइम्स उसको इस तरह की मिलती कि इधर गया, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो ऐसे चला गया, समटाइम्स इसी एंगल इसी जगह पर गया ऐसे। लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन इस तरह से हो गई है, एक दफ़ा यहाँ से उसने रे पास की तो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई, लेकिन जब 20,000 में से यानी आउट ऑफ 20,000 एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इस तरह से हो गया, मे बी उसको स्ट्राइक कर लिया था इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे आर कीप ऑन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम।
but he didn't know the exact path of the electron. That was discovered later. However, the sixth is that an atom as a whole is neutral. Therefore, number of electrons in an atom is equal to number of protons. Then he says, except electrons, all other fundamental particles that lie within nucleus are known as nucleons. He says that apart from electrons, any fundamental particle, any other element, any other thing that lies in the nucleus, we call it as nucleon. Did you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. So these were some like we can say some conclusions or some suggestions or some we can say we should say conclusion made by Rutherford. But later on, scientists performed some experiments, studied it, and they thought there are like some defects in Rutherford model. And what are these defects? We need to see these. अच्छा, सबसे पहले तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, इसने कहा था प्लम पुडिंग मॉडल इज नॉट करेक्ट। प्लम पुडिंग मॉडल कैसा था? अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, लाइक इफ दिस इज एन एटम, जो प्लम बहुत यानी कि रदरफोर्ड से बहुत पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि पूरे एटम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द एटम। बट यू नो दैट वी जस्ट हैव सीन कि वो सिर्फ एक छोटी सी जगह है राइट इन द सेंटर ऑफ द एटम, which is very much dense and which causes the deflection of alpha particles. Therefore, that is the place where positive charges lie. ठीक है, सिर्फ वो वही जगह जहाँ पर प्रोटॉन्स लाई करते हैं, बाकी स्पेस बाकी जगहों पर नहीं। ठीक है। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट्स द प्लम पुडिंग मॉडल। It had following defects. Number one, according to classical theory of radiation, electrons, being charged particles, should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, जिसको सपोर्ट किया था रदरफोर्ड ने, रदर उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं। बट अगर वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सिर्फ इमिट कर रहे हैं तो एक दिन आएगा जब वो फॉल होके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकें। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कीप ऑन रिमूविंग, और एक एटम खत्म ही नहीं होता कभी भी। वो किसी और एटम में चेंज तो हो जाता है लेकिन वो खत्म नहीं होता। मैस कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करता है कभी। सो दैट वाज द फर्स्ट डिफेक्ट। सेकंड इज, इफ इलेक्ट्रॉन emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact the line spectrum was observed। अब continuous spectrum कैसा होता है? continuous spectrum कुछ इस तरह से होगा कि लेट्स से कि ये इस तरह से है, फिर इसके बाद वो इस तरह से होगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा। आपने वो स्पेक्ट्रम देखा होगा ना जिसमें कलर्स होते हैं, लाइक ये मैंने भी ज़्यादा सही नहीं बनाया। तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी जगह से कलर ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। सेंटर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप कह सकते हो यस इट इज़ ग्रीन ओवर हियर, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। डैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब
इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए तो इनको पता चला कि ये इस तरह का नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है, लाइन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, समटाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और समटाइम्स एनर्जी रिलीज करते हैं। लेट्स से उन्होंने दो दफ़ा एनर्जी रिलीज कर दी, तो दो दफ़ा एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेंगे, तो उनको कुछ इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम मिला, रेदर देन के एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला हो। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ उनको मिल गई थी, ऊपर वाली नहीं मिली थी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम उनको नहीं मिला था। अब आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन अब पढ़ लिए, इसको आपको याद करना होगा एज इट इज। देयर वर टू डिफेक्ट्स। नंबर वन, according to classical theory of radiations, electrons being charged particles, it should release or emit energy continuously, and they should ultimately fall into the nucleus. But electron does not fall into the nucleus; it keep on revolving around the nucleus. So the first, um, this was the first defect in Rutherford atomic model. Second is, if electron emit energy continuously, they should form a continuous spectrum. But in reality, it forms a line spectrum. ठीक है, although scientists had objection on atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated, like ऐसा नहीं है कि उसने रदरफोर्ड ने कोई फजूल काम कर दिया था या बुरा काम कर दिया था या टाइम वेस्ट कर दिया लोगों का, नहीं। आपको पता है कि उसने डिस्कवर किया, तभी तो उसकी डिस्कवरी पे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई और फिर आगे एडवांसमेंट हुई। ठीक है, आप ये देखें, जैसे उसी की वजह से उसने हमें ये भी बताया कि एक एटम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, या एटम स्टेबल क्यों हो सकता है। और इस चीज़ के यानी उसकी स्टडी ने इन्वोक किया लोगों को, साइंटिस्ट को, टू स्टडी कि वेदर दिस यूनिवर्स विल स्टे स्टेबल और इट विल स्टे और इट विल collapse one day. An atom will collapse or it will stay stable. Like what is the stability? फिर रिसर्च किया, why does atom give line spectrum? पहले लोगों को ये लगता था कि वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन अब लोगों को लगता है कि दिस इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। तो उसने, like we can say that he made some positive contribution as well. Then scientists also considered three, there must be another model of atom. It indicated that Rutherford's model was not perfect. ठीक है, तो अब वो कौन सा परफेक्ट था, दैट इज द बोहर्स मॉडल थ्योरी। बोहर के बाद भी एक मॉडल आया होगा, एंड इट्स नेम इज, नहीं आया हुआ, नील बोहर का ही लास्ट मॉडल है जो आप पढ़ोगे। ठीक है, बट वी विल स्टडी इट टुमारो इंशाल्लाह। Till now, if you have any question, do let me know. Is there any question? No, sir. No questions, sir, but Falsa, could do you you, have any question? I think she has left now. Um, sir, just yes. once, could you repeat how cathode and anode rays are formed? I understand everything जब हम that एक we learned मेटल today. को हीट करते हैं, जब मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कैथोड रेज निकलती हैं। कौन से मेटल को, वो मेटल जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यानी कैथोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हम उसको कैथोड कह देते हैं। जब आप उसको हीट करते हो इलेक्ट्रिकली, तो कैथोड रेज फॉर्म करती हैं। जब वही कैथोड रेज गैस ट्यूब में प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स को हिट करती हैं, तो हिट करके उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हैं, समटाइम्स ऐड भी कर सकती हैं। लेकिन जब वो रिमूव करती हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उस मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं। तो इट दैट मॉलिक्यूल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज हाउ कैनाल रेज और anode rays are produced. You understand now? Could you repeat once more because your voice was cutting a lot, so I couldn't understand. बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि कैथोड रेज जब मॉलिक्यूल्स को हीट करती हैं, तो मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हैं या अपने साथ ले जाती हैं।
जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है मॉलिक्यूल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब बिकॉज मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। इस तरह से जब वो स्ट्रांग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और फास्ट मूव करेंगे, वी कॉल देम एज मूवमेंट ऑफ द कैनाल रेज। ठीक है, एंड कैनाल रेज आर इवेंचुअली पॉजिटिव रेज एंड पॉजिटिव रेज आर एनोड रेज। हाँ जी, अब समझ आई? Yes, thank you. ओके ओके, चलें, दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Sir, I'm supposed to Allah do these questions. Hafiz, sir. जी, Sir, are we supposed to do the questions in our copies? यस, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। ठीक The है, four questions that we discussed. Always. यस, द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। Okay, sir. या, ओके, Okay, अल्लाह sir. हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।